हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैन वी रीड पर। कैसी लगी मेरी पुरानी फ्रेंड्स की वीडियो? अच्छी लगी तो उसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फीलिंग्स कमेंट्स और थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर मत भूलना उसमें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सजेशन था उस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और मैं पूछना चाहती हूँ कैसा गया क्रिसमस? बहुत अच्छा गया है ना? मेरा तो बहुत अच्छा गया क्रिसमस, तो बहुत एक्साइटेड थी इसलिए मुझे बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपका क्रिसमस कैसा गया। और अब आने वाला है क्या, न्यू ईयर, तो और भी एक्साइटमेंट है ना उसके लिए। तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप कितने एक्साइटेड हो और क्या क्या प्लान्स हैं आपके, ठीक है। तो आज का फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग सीरीज़ का है एपिसोड 11। अब हम है सिर्फ 9 एपिसोड्स तक अपने गोल तक, जो कि 20 एपिसोड्स हैं। बट उसके बाद भी आती रहेंगी और क्रिएटिव और फन और एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी कैन वी रीड पर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना उस मेरे चैनल को, ठीक है। तो है आज का टॉपिक नेम्स ऑफ सीजन्स। बट क्या होता है, कुछ भी वर्ड्स लिखने से पहले क्विज में क्या होता है, क्विज हम करते ही क्यों हैं? क्विज टीचर्स भी क्यों करते हैं, क्विज हम करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमको याद रहने चाहिए ना कि हमने पुराना क्या सीखा था। अगर हमें याद ही नहीं रहेगा तो हमें कनेक्शंस लॉस्ट हो जाएंगे, और कनेक्शंस लॉस्ट हो जाएगा तो लैंग्वेज ही लॉस्ट हो जाएगी, लैंग्वेज लॉस्ट हो जाएगा तो लैंग्वेज आप बोल ही नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे और सुन भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये अच्छा है कि हम रिवाइज करते रहें, हर रोज़ बोलते रहो, लिखते रहो कि आपको याद रहे लैंग्वेजेस, और आप एक बार में अच्छे से बोलना सीख जाओ हर लैंग्वेज को, ठीक है। तो करते हैं शुरू कुछ क्विज के साथ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन सोचती हूँ मैं। चॉकलेट को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और किस किस की फेवरेट है चॉकलेट और कौन सी फेवरेट चॉकलेट है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये फ्रेंच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉकलेट को फ्रेंच में लिखना है, बाकी सबको फ्रेंच में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी कौन सी चॉकलेट फेवरेट है और नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट शायद आपको बाद में हमारे सीरीज़ के एंड तक पता ही चल रहा है कि क्या होता है, इसको पूरे को बोलना ही क्या है फ्रेंच में, है ना। और जिन लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि क्या बोलते हैं इस पूरे लाइन को फ्रेंच में, ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। या नहीं, हाँ, आई वॉन्ट टू गो टू द हॉस्पिटल और उसके बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट लेफ्ट को क्या बोलते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी ये पूछा था, बट मैं लेफ़्ट और राइट को पूछती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स ना बहुत बेसिक वाले वर्ड्स है और आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कहीं फ्रांस में जा रहे हो तो किसी ने बोला द्वाह या गोश, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि हाँ द्वाह क्या, उसका मतलब क्या होता है, गोश का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये तो थे क्विज के क्वेश्चंस। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। इनका आंसर नहीं समझ में आया तो मेरी पुरानी वीडियोस देखना, और अब फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, तो आज के जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया नेम्स ऑफ सीजन्स, और अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर। तो सबसे अप्रोप्रिएट तो इस टाइम के लिए होगा ये वर्ब विंटर, बट still we need to learn all the seasons, yeah. It won't be good and won't be applicable if we just know what winter is in French, right? Okay, so let's start. So we'll first learn the names of seasons in French. So first of all, seasons itself in French is les saisons. Les saisons. Let me break that down. Les saisons. Les saisons. Les saisons. So typically SAISONS means seasons. Okay, so let's start with the names of seasons. So first of all comes summer. Okay, so do write in the comment section which seasons you're a fan of. So if you like summer, if you like autumn, if you like winter, if you like spring, do let me know in the comment section below. And don't forget to like, share and subscribe, okay?
And if you're new to my channel, I'll tell you that every Friday comes a new French language learning series video where you can learn French in just a few minutes, even though if you have a very congested or busy schedule. Okay, so don't forget to like, share and subscribe if you're new on this channel. Okay, so let's see what summer is. Le été. Ooh, lots of apostrophes and marks here now. So let's see how to write it carefully. L. Let me write it with a pen this time. 1 second. Yes, this one's better. L E T E. Okay, that's it. But that's not it, because we also have these marks here. Yeah. So E. Of both the E's there are marks, those symbols. You see. Let me show you these ones. Yeah, so don't forget when you're writing the spelling to write all the marks, all these apostrophes down, because if you don't write this, who knows, this word can also mean something different in this language which you don't want to say, right? Okay, so that was summer, and autumn is actually very similar to how you say it in English and also the spelling. So let's see. Yes, so le automne. Automne. Okay, so all you need to do is just add a L if you want to say the, and add a E at the end of autumn to make it a French word. So le automne. Le automne. Okay, and winter is le hiver. Le hiver. Okay, let's see how to write this down. So L, I'm breaking this down for you. Apostrophe E ver. So you must be thinking why H and I is pronounced as E. It's because actually when you add L, apostrophe and L and H together, it doesn't it hides the sound of H. Okay. So le hiver. Okay, but if you were to cross out the L, which just makes a winter, so it will be hiver. So the sound comes he, but in the winter, it's l'hiver. Okay, so do keep that in mind. Spring is le printemps. Okay, so this is actually a difficult one to pronounce and a difficult one to also write. So the problem is that if you practice your pronunciation on translator, sometimes this word is really hard in mostly of these to get that right. So we'll practice this and we'll break this down. Le pri. So it's le printemps. Le printemps. Le printemps. Le printemps. Okay, means spring typically. Let me write that down again. That word. L E P R I N T E M P S. And do write down in the comment section below if you can find any connections to remember this word, and associate this word with spring. Okay. And again, don't forget to like, share and subscribe if you have not already done this to the video and to the channel. Okay, so now let's go into a bit dig deeper into this topic. So it's describing the seasons. So like rain, snow, wind, clouds, rainbow. Ooh, do let me know in the comment section below how many of you love rainbows. Okay, because I love rainbows. And which is your favorite color? Well, the rainbow itself is really beautiful, but what is your favorite color? And out of all of the rainbows, all of the 7 rainbow colors. Okay, do let me know. Yes, so it's rain. So this one is also again a little difficult, but let's explore it together. La pluie. La pluie. Sorry. La pluie. Okay, rain is la. Okay, la. Pluie. La pluie. La pluie. Okay. And snow is la neige. La neige. La neige. La neige. And ni et
G. Ni. E. G. Nieg. Okay? And wind is le vent. Le vent. Le vent. V. Vent. Okay? And clouds is le nuage. This is difficult because nuage. Nuage. Okay? So nuage. Nuage means clouds. Le arc-ciel. This is rainbow. Le arc-ciel. Le arc-ciel. Okay? Arc. Un. Ciel. And don't forget these hyphens in between, because if you merge them all together, they don't mean the same meaning. Okay? So le arc hyphen en hyphen ciel. Le arc un ciel means rainbow. Now time adverbs. When you need to say that it always rains, or it never rains, or it this or that. So to describe when this happens, so time adverbs. Yes? Time adverbs are also very important in seasons. So if you have to tell that when this happens, or this happens every day, this doesn't happen that often, not, and all that. Okay, so let's say always is toujours, toujours, toujours. Oh no, let's do that again. Sorry. Toujours. Toujours. Okay? Toujours. Okay? Means always. Every day means tous les jours. Tous les jours. So it's basically the same thing. But the difference between everyday spelling in French and always spelling in French is that, you see, it's T-O-U-J-O-U-R-S. But in tous les jours, there is an extra S which is not there in toujours, and there is a LES which is not there in toujours. So tous les jours. Okay, means every day. Normally in French is normalement. 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 Let me write that down, breaking down. Normal. Normalement. Okay, means normally. And frequently means fréquemment. Fréquemment. Okay? It's F-R-E-Q-U-E-M-E-N-T. Fréquemment. And there is a little apostrophe over the F-R-E's after E. So fréquemment. Okay, don't forget to say the R, or else that will change the meaning from frequently to something else. Okay, so fréquemment to frequently. This is a little different because sometimes when you need to roll the tongue for the R, it becomes difficult. But that's why it's okay if you practice every day, you'll get the hang of it. So fréquemment means frequently. Souvent means often. Souvent. Souvent. Okay? And often, jamais. Souvent means often, and jamais means never. So souvent, often, jamais, never. Okay, let's practice never. Jamais. Jamais means never. So these were today's French words. I hope you liked the video, and if you did, don't forget to like and share and subscribe the video, and don't forget to subscribe the channel if you are new on it, and don't forget to write down your thoughts or suggestions in the comment section below.
and answer all of the questions I've asked, and especially the quiz ones. And if you're like, oh, I don't understand, so I don't write, so please don't do that. If you don't understand, just write in the comment section below and I will help you. Okay. And I want to wish you a happy new year, and do let me know in the comment section below is what you hope to happen next year. What are your goals for next year if you want to share some? So again, a happy new year, and I wish you a happy new year, and I hope you like this video. If you do, don't forget to like, share and subscribe. Write your feelings in the comment section below. I'll meet you in a next new and fun video. Bye bye. बुक्स के नॉलेज से तो हम ज़मीन से लेकर आसमान तक जा सकते हैं, और यही तो हमें बुक सिखाती है।